Hello again. This is Sai Krishna. So I have secured rank 125 in UPSC Civil Services Examination 2025. So this was my fifth attempt and second mains and second interview. So for the context, I scored 272 marks in my previous in my first mains I have given in 2022. 144 in paper 1 and 128 in paper 2. So this time I thought of improving in paper 2. I scored 290, 140 in paper 1 and 150 in paper 2. I'm not very sure of what led to the reduce in marks in paper 1, and I have noticed a generally downward trend of marks in humanity optionals. Humanity matlab ये non-technical optionals this year. So that might also be the case, but I have also improved my marks to 150. Probably if the marking had been liberal, तो और improve हुए होते शायद. So 140 and 150 in paper 1, paper 2. So in this video, I'm going to cover about how you can use ChatGPT in the preparation of mains, in the preparation for mains, and specifically for psychology optional also. So directly jumping into the topic. So you resort there are some prerequisites before you start using ChatGPT to use it effectively. तो पहला है, you should have completed all the syllabus from these standard sources. जो भी books हैं, like for psychology के लिए तो बैरन, पेपर 1, या और लोग पढ़ते हैं सिसिरली, मॉर्गन एंड किंग, तरह तरह के बुक्स पढ़ते हैं. मैंने तो पर्सनली बैरन पढ़ा है एंड एनसीईआरटीज़ पढ़ा है 11th and 12th. एंड पेपर 2 के लिए आई हैव रेड स्मारक स्वेन, बट यू कैन आल्सो गो फॉर A.K. Singh's social psychology, which I have one of my seniors has recommended this. इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, सो दैट माइट मेक यू स्टैंड आउट इन थ्रू योर आंसर्स. तो पहले सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस टू दिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो नंबर 3, थोड़ा आंसर्स लिख के डेवलप एन आइडिया ऑफ ए गुड आंसर. ठीक है, ये तीनों आर द प्रीरिक्विजिट्स बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग ChatGPT और एनी अदर मतलब टेक्नोलॉजिकल टूल टू एनहेंस योर प्रिपरेशन, एनहेंस द आउटकम्स ऑफ योर प्रिपरेशन. तो ये कैसे फिगर आउट करेंगे? सो देर आर वेबसाइट्स बाई एनसीरियो, अनुराग जैन सर and Ravi Jain sir, and my YouTube videos too, and my the mock test, the papers, the mock exam papers that I have uploaded in the Telegram channel. तो ये सब आप रेफरेंस में ले सकते हैं. दीज आर मतलब द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज एनसीरियो सर, अंकित पाठक सर, हु होस्ट द वेबसाइट ऑफ एनसीरियो, ही स्कोर्ड 313 in psychology. Anurag Jain sir scored some whooping 333, I guess. And Ravi Jain sir scored around 309 something, and I have scored around 290. So ये these are the living proofs of what works in the actual UPSC mains. तो ये आंसर्स पढ़ के तो थोड़ा एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, जैसे रिसर्च स्टडीज़ मेंशन करना, ये इंट्रोडक्शंस, हाउ टू मैनेज विथ इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन लिखें या डेटा ड्रिवन या कुछ रिसर्च स्टडी रिटन ड्रिवन लिखें या कोई रीसेंट एग्जाम्पल बेस्ड लिखे इंट्रोडक्शन. एंड हाउ डू यू राइट द कंक्लूजन्स, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कंक्लूजन. ये तो बहुत जेनरिक आइडिया है, बट कंक्लूजन्स में आप लेट्स से कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन देना, यू कैन गिव. जैसे मेमोरी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो यू कैन टॉक अबाउट द मॉडल ऑफ मेमोरी
has led the Philip for the further understanding of the different types of memory and different the interactive nature of the memories. तो although it is not universally accepted, तो ये बात के रिसर्च के लिए काम आया है. ऐसे करके लिख सकते हैं. If the question is about the model of memory, this is also called as, मतलब this was proposed by Atkinson, Craig and Atkinson, I guess. तो मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है. सो या मतलब ये सब द आइडिया ऑफ इंट्रोडक्शन, रिसर्च स्टडीज़, कौन सा क्वेश्चन को पॉइंट्स फॉर्मेट में आप आंसर कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन वुड लुक गुड एज अ क्या बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्म में, कौन सा क्वेश्चन वुड लुक गुड. तो ये एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है लुकिंग एट दीज सोर्सेस. सो दैट्स हाउ यू डेवलप एन आइडिया ऑफ ए गुड आंसर. तो ये तीनों करने के बाद यू स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी. सो लेट्स अज्यूम वी हैव डन दिस एंड अब लेट्स मूव टू हाउ यू कैन यूज़ चैट जीपीटी. तो चैट कोई भी पर से कोई भी जीपीटी एक जेनरिक टर्म यूज़ करते हैं. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उठता है आपके दिमाग में कि प्रॉम्प्ट्स कैसे दें. So that's how you solicit answers, solicit responses, right? Elicit responses. तो ये prompts कैसे, तो the source of this would be your idea of the good answer. मतलब उस एक good answer में क्या क्या होना चाहिए. You can post the question, नीचे directive keywords होते हैं कि include research studies, case studies, real life examples, multiple dimensions, and introduction and conclusion के बारे में brief दे सकते हैं. एक striking introduction and forward looking conclusion. तो ये सब prompt में आप include कर सकते हैं. and मैं एक example जैसे दिखाता हूँ. so once you स्टार्ट यूजिंग दिस जीपीटी, तो एक थ्रेड को आप ट्रेन कर सकते हो. लाइक दिस थ्रेड आई हैव यूज्ड टू इवेलुएट माय ओन आंसर्स आई हैव रिटन एज अ मॉक टेस्ट. सो इसका बेसिस है 2023 का यूपीएससी ऑफिशियल मेंस पेपर. तो शुरुआत के आंसर्स में आई हैव गिवन द प्रॉम्प्ट, गिवन दिस, तो 250 वर्ड्स एक्सप्लेन, ये सब. तो yes, you can give those directions. So the response would look something like this. The GPT machines give you decent the research support. So let's say after I have trained this, describe the factors influencing perceptual organization with reference to past experiences and perceptual readiness. ठीक है. Introduction, it has covered the Gestalt school, opening into the discussion. So it has structured the past experiences and it has given research support. Example, ठीक है, definition, top example, research support, same definition, example. इसमें I could have asked about some research studies about perceptual readiness as well. However, it has mentioned Brunner. So ये होता है, मतलब it has given one extra dimension of contextual and cultural influences. ठीक है, how do these get influenced, एक छोटा सा value addition types. तो कंक्लूजन हुआ फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब कैसे कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं इसके, अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंसेस. यहाँ पे थर्ड लाइन में, इस पैराग्राफ में थर्ड लाइन में देखो तो अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंसेस इज क्रूशियल इन अप्लाइंग डोमेन सच एज आई विटनेस. तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन हो गया. दिस हैज़ हैपेंड वंस आई मतलब रिपीटेडली क्वेरीड. तो अभी स्क्रॉल अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इट इज़ लोडिंग. तो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट. तो इफ़ यू थिंक मतलब एनीथिंग इज मिसिंग इन आंसर, एनीथिंग वुड including any other thing would make it better, you can always add it in the prompt. ठीक है. तो that's why developing an idea of a good answer becomes very important.
So it's not just मतलब आप preparation शुरू किए and straight away you'll use GPT and you'll frame those quick notes and you directly go into mains and you write excellent answers and you'll clear the exam. ऐसा नहीं होता. तो ये चीज़ें अभी तक जो किए हैं करते आए हैं वो करना ही पड़ेगा. So before the emergence of GPT ये सब करते थे and we used to practice mock tests and go into the exam and perform there. तो अब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आ गया टू तो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो ये दिस इज टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन. तो वंस दिस बिकम्स डेमोक्रेटाइज्ड, सब यूज़ करने लगते हैं, फिर कुछ ना कुछ आपको अपने आप से इवॉल्व करना पड़ेगा या यू विल हैव टू गेट वेरी गुड एट दीज थिंग्स, एट एग्जीक्यूटिंग दीज थिंग्स. तो जीपीटी से तो प्रॉम्प्ट्स समझ गए हम लोग. तो एक ही थ्रेड में ऐसे ट्रेन करते जाइए, नीचे नीचे क्वेश्चंस पूछते जाइए, इम्प्रोवाइज करते जाइए. एज यू आस्क मोर आउट ऑफ द जीपीटी इट विल गिव यू मोर. द मोर क्रिस्पनेस दे सकते हो आंसर्स को. नंबर ऑफ वर्ड्स लाइक 250. आई यूज टू यूनिफॉर्मली गिव 250 फॉर 10 मार्कर्स एंड फॉर 15 मार्कर्स एंड 20 मार्कर्स आई यूज टू गिव 350 to 400 वर्ड्स. थोड़ा सा ज़्यादा ही एलिसिट करता था मैं. So here you can also add कि movie references दे दो, like some a creative point, creative angle. जैसे 2025 में एक क्वेश्चन था about Wolffian hypothesis. So I have directly introduction में मैं I have written about the movie Arrival, जिसमें this Benjamin Lee Whorf का जो premise है about language development, so that gets applied in that movie Arrival by Denis Villeneuve. So I have mentioned this thing in the introduction of this. So that might give, matlab I don't really know whether this has given me an extra mark or not, but that will surely lighten up the mood of the examiner and he might have an impression about your paper that yes, this person has interesting viewpoints, interesting observations. तो वो कर लीजिए. So ये GPT से प्रॉम्प्ट हो गया. सो सेकेंड हुआ हाउ टू यूज़, मतलब हाउ टू मतलब व्हाट आर द एस्पेक्ट्स वेयर AI कैन हेल्प यू इन बेटरिंग योर आंसर्स. ठीक है, अल्टीमेटली इट्स यू गोइंग एंड राइटिंग इन द एग्ज़ाम. तो मेरे लिए पर्सनली तो स्ट्रक्चरिंग was the single biggest benefit that I could derive from GPT. तो एज आई हैव शोन यू, तो इट ढंग से स्ट्रक्चर करके देता है आंसर को. इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग, सब मतलब रिसर्च सपोर्ट, सबनिमिनल एडवर्टाइजिंग में. तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय सबनिमिनल परसेप्शन? डिस्कस इट्स रोल इन एडवर्टाइजिंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स. सो जनरली मैनुअली इसको ब्रेक डाउन करें तो व्हाट डू यू मीन बाय सबनिमिनल परसेप्शन? यू जस्ट कांट डायरेक्टली राइट अ डेफिनेशन, जेनरिक डेफिनेशन नहीं लिख सकते हो आप. व्हाट डू यू मीन बाय, तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी लिखना पड़ेगा. सो इंट्रोडक्शन कैन बी ए बिट लॉन्गर. जैसे कि इफ़ इट्स अ 10 मार्कर्स इंट्रोडक्शन आता है 3-4 लाइन्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. इफ इट इज़ 15 मार्कर यू कैन गिव 2 पैरास ऑफ इंट्रोडक्शन, 15 मार्कर और 20 मार्कर्स. तो I suppose it's 15 marker as I can see the nature of the question. तो इसमें definition, it has understanding, subliminal perception, there is a separate. So when you explicitly answer the question, each part of the question, that gives the examiner clarity that you have understood the question and you have answered the concern that is central core aspects of the question. So discuss its role in advertising with the help of suitable examples. ठीक है, subliminal advertising, it has generated a creative heading, subliminal advertising. Role of subliminal perception in advertising, ये थोड़ा लंबा हो जाता है and थोड़ा mundane सा हो जाता. But here subliminal advertising, this sounds better. Mechanism and impact. Discuss its role in advertisement. Role की जगह mechanism and impact. So examples, so methods used, examples. So this is an good structuring. मतलब it's not too much creative कि मतलब एग्जामिनर समझ ना पाए and it's not too much mundane कि you'll be a part of the herd.
तो ये इसलिए मैं मेजरली यूज़ किया हूँ, मैं मेजर बेनिफिट मेरे को इससे हुई है चैट जीपीटी से. So structuring में and examples, so you can also prompt for the recent examples, recent Indian examples, recent research examples, case studies. ये सब में ऐसे करके आप specifically prompt करके आप you can elicit the response. तो इन aspects में GPT काम आता है. Number 3, don't overuse it. This is a huge red flag. ठीक है, only मतलब I was on the verge of overusing it. I also thought I think I have overused it because I have also tried to generate crisp notes. So there is no end to deriving content from GPT. ठीक है, so you can give 100 PYQs in a single prompt and ask it to generate crisp short notes. ठीक है, crisp short notes with pointers. वो भी आप यू कैन एलिसिट ऑल्सो. मतलब उससे क्या होता है, यू आर नॉट एक्चुअली राइटिंग द PYQs, यू आर नॉट डाइविंग डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स एंड आपका रिकॉल ये सब it can't be made using such a crisp notes directly given out by the machine. तो वो रिपीटेडली पढ़ेंगे तो भी आपका लाइक देर आर नो मेमोरी चैनल्स दैट गेट ट्रिगर्ड बाय दैट क्रिस्प नोट्स. तो ये शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स वगैरह GPT से एलिसिट करना इज़ नॉट सच ए गुड आइडिया. तो मैंने सुना है कुछ लोगों ने क्लियर किया है यूजिंग ChatGPT नोट्स फॉर एथिक्स एंड ऑल. तो ठीक है, यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, दैट्स व्हाट मैटर्स इन द एंड. मतलब वो आपको सूट करता है तो यू कैन ट्राई आउट, बट I doubt whether you will be a good civil servant. मतलब बाद में तो struggle करोगे क्या if you are getting used to this and not building the content in your own mind. ठीक है, तो वो सोच लीजिए. So that's of no use. Even though you clear the exam, that's of no use for the country. तो crisp short notes ये मतलब if you're on shortage of time and if you think मतलब ये मेंस के लिए मैंने तैयारी नहीं किया, I'll go and do something and come back, तो तब you can use it if it is your first attempt of or if it is your non serious attempt, तो वो सब कर सकते हैं. तो don't over use it. बस मैंने तो इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया है PYQs के लिए एंड स्पेसिफिकली GS के लिए. I couldn't use it much because almost all the GPTs have a bit of outdated information and इतना बढ़िया डेटा पॉइंट्स एंड रेफरेंसेस के साथ आंसर नहीं मिल रहे थे मुझे. एंड फॉर दैट टॉपर्स आंसर्स कॉपीज आर वर a better source for me. I suppose I tried using, अगर मैं साइकोलॉजी के लिए इतना एक्सटेंसिवली यूज़ किया, I would have used it for GS also, but I didn't see any value in using it for GS. So these days people are giving some trained agents, AI agents and trained threads for specific use of for GS4 for answer evaluation वगैरह वगैरह. So these are paid again. So it's just using a free resource to and put some time in it and make something that is paid. So I really don't like this model and idea. So education should be free. Well, if you are giving out, give out. मतलब ऐसा है. So this is how you can use ChatGPT to benefit your mains preparation. So shoot any questions in the comments or any specific cheese regarding GS3. I scored. I'll give the context for GS also. I have scored 108 in GS1, 113 in GS2, 87 in GS3, and 103 in GS4, and 105 in essay during my previous mains 2022. This year I scored 118 in essay, which is supposed to be which is assumed to be a good score this year, because highest went somewhere around 130 something,
and I have scored 97 in GS1. I don't know what went wrong really. I scored 107 in GS2. I really don't know why this reduce happened. I scored 94 in GS3. I could incorporate some new aspects which have yielded me returns, and I scored 110. I just written case studies in a time bound manner this year. So without much extra effort 110 आ गए थे. तो you can shoot me any questions with any questions regarding the strategies of these papers as well. I'll try and share my how I went through it. So thank you for listening till here, and all the best for your mains.